Hello, everyone. So, we are back again with the live classes. So, let me tell you what it is all about. तो basically हम live classes शुरू कर रहे हैं for the 11th and 12th batches. All right. And this will be a full-fledged NCERT course जो कि आप experience करेंगे. And you can experience this entire live classes. That means 3D interactive live classes by downloading an app from the Play Store, and that is available in the name of METAcademy. All right, यहाँ पे आप देख सकते हैं. So METAcademy नाम से एक ऐप है. Uh, uh, you can just download it from the Play Store for free, and you can avail all the classes of 11th and 12th batches. So 11th के लिए basically जो batch है वो that is called as the incept batch, while 12th के लिए जो specific batch design किया गया है that is called as the emerge batch. So we are going to have separate batches for both 11th and 12th, and 11th के लिए incept batch होगा and 12th के लिए emerge batch होगा. So you can download it, and you can avail all the you can be there is the availability of all the daily 3D live classes that will be going on. Then there will be the daily practice papers, DPPS आपको मिलेंगे. All right, so that you can practice topic to topic. And apart from that, you will also be provided with the 3D interactive PDF notes. है ना? So since this is a free course which is going to be available for all of you, and so that's why you can enroll yourself today, because this is going to start from tomorrow. कल से 17th of May से ये शुरू हो रहा है, and you can avail all the important notes, all the important guidance from this course. Joined. So that's how we can you people can learn biology in a very interactive way. And not only biology, we will be having an entire PCB course. हमारा एक पूरा PCB course होगा जो कि NCERT पे completely based होगा. तो इस पे फोकस रखते हुए हम इस METAcademy ऐप के थ्रू you can go through the interactive live lectures. All right. So this is all about the live lectures that we will be having from tomorrow. All right. So let us start with the topic that we were discussing earlier, and उसमें हम human reproduction के बारे में study कर रहे थे. So basically we were talking about the human reproduction part, और उसमें हम लोगों ने अभी तक we have discussed about the male and female reproductive system, then spermatogenesis, sperm structure, ये सब हम लोगों ने देख लिया है. Now let us just talk about that कि ये जो प्रोसेस है oogenesis का, spermatogenesis तो हम लोगों ने देख लिया था, बट ये जो प्रोसेस है oogenesis का, how this process of oogenesis is beneficial, and what are the important features that are inculcated in this process of oogenesis. So we will be discussing all those aspects as well. Just a moment. So इसमें हम मॉडल्स जो बेसिक इंपॉर्टेंट मॉडल्स जो कि इनकलकेटेड है एंड इन्वॉल्व है वो हम लोगों ने देखा था. ऑल राइट, सो वी हैव सीन द ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट जिसमें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को गो थ्रू किया हुआ था. ऑल राइट, इसमें हम लोगों ने then we have also seen the cross section of the seminiferous tubule and the cross section of sperm as well. ये कल हम लोगों ने देखा था. Now let us just take a look into the cross section of the ovary first. That is actually related with the this one. That means the process of oogenesis. Yeah. Now let me first tell you कि oogenesis है क्या, है ना? You can see the section of the ovary over here. Now oogenesis is basically
the process of forming ovum. All right. So forming ovum from the very important structures which are called Graphene Follicle. All right. और ये जो ओवम बनते हैं, so ये basically ये जो आप यहाँ से यहाँ ये पूरा structure आपको जो ये दिख रहा है, this entire structure which you can see over here, this is entire an ovary structure which you can see. This is entirely an ovary structure. अब ovary के अंदर में whatever the things or whatever the important sections that you can see over here is that. Just give me a moment. Let's just move on to the page first and then we will discuss about it. Okay, so here we were talking about this part of the ovary. तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि exactly जो ovary का ये structure है, what are the different components that are found in the ovary. All right, so here which you can see, these are basically the ovarian follicles. These are ovarian follicles. Just a moment. In little time. Okay. Nevertheless. So ये हमारे कुछ ovarian follicles होते हैं which are formed in the ovary. All right. And these ovarian follicles, they can be of various types. All right. They can be either the primary follicle, yeah, or they can be the secondary follicle, all right, or they can be the tertiary follicle. So primary follicle, secondary follicle and tertiary follicles. तो ये जो follicles दिख रहे हैं, ये सारे ovarian follicles which are the developing follicles in the ovary. जैसे for example this one if you are going to see, so this one is representing the tertiary follicle over here. ठीक है. अब जब stages start होता है, and I already told you that oogenesis is basically the process of the formation of the ovum from the ovary, you can say. इस पूरे process of oogenesis में the one thing which is again very important is that कि ये ovum जो बनता है, the process of the formation of ovum, it actually starts during the embryonic development itself. So this actually starts with embryonic development. So the process already starts with during the embryonic development, but ये जो ओवम का फॉर्मेशन होता है, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन मियोसिस 1 मियोसिस 2 जो होता है, वो एक्चुअली ऑल टुगेदर जो अकर करता है, वो फिर प्यूबर्टी के स्टेज तक आते आते होता है. एंड दिस अल्टीमेटली ये जो टर्शियरी फॉलिकल बनता है, टर्शियरी फॉलिकल अल्टीमेटली अपने आप को, ये आपका टर्शियरी फॉलिकल वाला हो गया, ये अल्टीमेटली फिर आके मेच्योर करता है इनटू अ फाइनल फॉलिकल व्हिच हियर इज कॉल्ड एज द Graphene follicle over here.
क्लियर? दिस इज कॉल्ड एज द ग्राफियन फॉलिकल. नाउ ग्राफियन फॉलिकल का जब रप्चरिंग होता है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं. So when the rupturing of Graphene follicle take place, just a minute. I guess there is some issues. Oh, nevertheless. Uh, so whenever the Graphene follicle development takes place, तो यहाँ तक देख लिया था हम लोगों ने, which is the Graphene follicle. So rupturing of the Graphene follicle is ultimately going to release the ova. इसका जब रप्चरिंग होगा तो यहाँ से अल्टीमेटली ओवम जो होता है वो रिलीज हो जाता है. ठीक है. This will be ultimately released. So these structures which you can see over here, these are basically the remaining parts of the Graphene follicle which gets transformed into a yellow mass of structure which is called corpus luteum. And again, this is going to release a very important hormone, and that hormone is considered to be as the progesterone hormone. So this usually secretes progesterone. All right. And this progesterone hormone is ultimately considered to be, or it is known as a pregnancy hormone, because ये जो होगा hormone, this will be ultimately responsible for maintaining the level of or maintaining the endometrium of the uterus. Uterus का जो endometrium होता है ये उसको maintain करके रखेगा, so that even if the fertilization and the pregnancy takes place ना, तो वो इसको वो जो endometrium lining है वो break ना करे during the menstrual cycle process. So that is the case. All right. अब इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको फिर से बता देती हूँ, वो ये तो हमारे लेबलिंग्स की बात हो गई. ठीक है. एंड अगेन वी कैन जस्ट minimize this model, and we can shift this model a little bit over here. Now let's talk about oogenesis over here. तो ये प्रोसेस होगा कैसे, ये फ्लो चार्ट के फॉर्म में I'll explain. ठीक है. So this basically starts with the process of the oogonia. ठीक है. So this is going to start with the oogonia part, or oogonium you can say, which is diploid and having 46 number of chromosomes in them. All right. Now this oogonia, this is basically going to differentiate itself, and it will undergo the process of mitotic differentiation. So since it will undergo the process of mitotic differentiation, तो ये यहाँ पे अपना नंबर जो होगा
सेल्स का वो बढ़ाएगा. So this will undergo mitosis. तो ये अल्टीमेटली 2 सेल बनाता है, which is called as the primary oocyte. This is called primary oocyte. So already मैंने आपको कल spermatogenesis वाले प्रोसेस में एक्सप्लेन किया था कि प्राइमरी oocyte एक ऐसा जैसे कि माइटोसिस जब भी होगा तो माइटोसिस डिफरेंशिएशन में द क्रोमोसोम नंबर एंड द प्लॉइडी विल रिमेन कांस्टेंट. ठीक है, उसी तरीके से इसके केस में दैट मींस इन केस ऑफ योर oogenesis पार्ट, oogenesis के पार्ट में जब भी माइटोसिस होगा तो ये आपका oogonia से जो प्राइमरी oocyte बनेगा, दिस विल आल्सो बी हैविंग द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ओवर हियर. So this will also be having the same number of chromosomes. ठीक है, तो ठीक, तो अब primary oocyte में there is this primary oocyte will now divide, since this is the mitosis part, so definitely there will be the meiosis cells that will be happening और meiosis division that will take place. तो उसके लिए क्या होगा कि जब इसका meiotic first division होगा, ठीक है, that means the process of meiosis 1 that will take place over here. तो उसके वजह से ये फिर अल्टीमेटली 2 सेल बनाएंगे like this. एक छोटा सेल बनाता है और एक बड़ा सा सेल बनेगा. So this is meiosis 1 is basically an unequal division, remember this, क्योंकि इसमें 2 सेल्स बनते हैं. ठीक है, तो ये जो आपका ये वाला जो सेल बन रहा है ना, this cell which is being formed, all right, ये वाला, this is called as the secondary oocyte. और क्योंकि ये रिडक्शन डिवीजन है, so that's why the chromosome number in case of the secondary oocyte becomes haploid with having 23 number of chromosome over here. तो ये वही वाला प्रोसेस है जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है एंड आपको मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में आई एम एक्सप्लेनिंग दोज थिंग्स टू यू. ठीक है, दिस इज द केस. सो इट स्टार्टेड विद द oogonia जिसमें माइटोसिस का डिफरेंशिएशन हुआ. ठीक है, तो अल्टीमेटली ये प्राइमरी oocyte हमारा बनाता है. लेट मी जस्ट मैक्सिमाइज दिस पार्ट. ऑलराइट, तो ये प्राइमरी oocyte बनाया. सो द फर्स्ट meiotic डिवीजन टेक्स प्लेस. तो ये छोटा सा पोलर बॉडी बनाता है एंड अल्टीमेटली दिस विल बी फॉर्मिंग द first polar body and the secondary oocyte. So first polar body and secondary oocyte जब ये बनेगा तब अल्टीमेटली जो होगा इसमें process of division will be unequal. So since the process of division is unequal, so the first polar body which is formed is small and the secondary oocyte which is formed is bigger. तो यहाँ पे जो हमारा ये बनता है, this becomes the first PB, that becomes the first polar body. ये हो जाएगा. Now this secondary oocyte will further undergo the process of unequal division to form and another cell which is called ova. इसमें ultimately division जब होगा और इसमें second meiotic division होगा. So since it will be having the second meiotic division or second meiosis, so this will give rise to the ovum, and along with that this will give rise to the second polar body. ठीक है, and once this ovum is formed, this ovum is ultimately released from the ovary by the process of the Graphene Follicle. So this is basically released by ovary by the process of Graphene Follicle. Clear? So that is the case. So this is all about the oogenesis that we have seen. तो हम लोगों ने फिर से मैं एक बार क्विक रिकैप आपका करवाती हूँ. तो इससे हमें ये पता चला that the process of oogenesis, it is going to start with this oogonia which is having diploid and 46 number of chromosome. और ये मैंने ये कब शुरू हो जाता है?
ये ऑलरेडी शुरू हो जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेज में। और क्योंकि since this oogonia will undergo the process of mitosis differentiation, so initially ये अपना number of cells को बढ़ाएगा। तो जब अब आपको आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है that I have written over here कि यहाँ पे मैंने follicles लिखे हुए थे, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्शरी फॉलिकल, तो वो कब बनेंगे? तो जब वो ये प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉलिकल्स मैंने मेंशन किया था ना, वो सारे के सारे फॉलिकल्स इन बिटवीन द प्राइमरी oocyte एंड सेकेंडरी oocyte बनते हैं, ठीक है। सो ऑल द फॉलिकल्स दैट आई हैव रिटन, वो सारा का सारा प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte के बीच का स्टेज होता है, जिसमें डिफरेंशिएशन होता है, प्रोसेस ऑफ डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, तब वो उनकी साइज इंक्रीज होती चली जाती है, देन अल्टीमेटली दे फॉर्म द टर्शरी फॉलिकल ओवर हियर, है ना। लेकिन क्योंकि हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड थोड़ा सा रहना है, so that's why this flow chart that is given over here, which you can see, is representing the entire process of the oogenesis over here। ये चीज होता है, ठीक है। Just give me a moment। I think there's some network issue because of that. This is creating a little trouble। Okay, so here the process of oogenesis uh, basically starts, just a moment। So here you can see that basically the process of the formation of the mature female gamete is called as the oogenesis, and which is actually marked by the which is actually different from the spermatogenesis process। तो difference का जो इसमें बोल रहा है point, so that we will note it, क्योंकि जो spermatogenesis का process है, all right, so spermatogenesis में हम लोगों ने देखा था that spermatogenesis actually begins at puberty। So this begins at puberty, while the process of oogenesis basically starts during the embryonic development।
सो ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही शुरू हो जाता है, ये होता है. सो देयर इज अ ह्यूज. अब उसमें सबसे बड़ी बात, इसमें जो रोल होता है वो कुछ सर्टेन हार्मोन्स का होता है, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट हार्मोन जो हो जाएगा वो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा. बट अपार्ट फ्रॉम दिस, in case of this process of oogenesis, the main hormone which is responsible for regulating all these entire process is the progesterone, and along with that it is estrogen as well. ये दो important hormones होते हैं. All right, तो कुछ basic differences होते हैं. Sometimes the questions in the NEET examination is asked on some of these basic differences. All right, sorry for the little inconvenience because आज कुछ connectivity issue है, so because of which the things are getting intercepted in between. All right, but from the next lecture I hope the things will be resolved. So for that reason only थोड़ी problem आ रही है. All right, so this was all about the process of the oogenesis that we have seen. और यहाँ पर जो एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये कि this part or this section which you can see over here, ये वाला जो पार्ट होता है ना, बेसिकली ओवरी का जो पार्ट है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, एक कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है और एक मेडुला वाला पार्ट होता है. सो वन इज द कॉर्टेक्स एंड द अदर इज द मेडुला. ठीक है, सो जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है दैट इज द पेरिफेरल पार्ट, बेसिकली दैट इज द पेरिफेरल पार्ट. वाइल मेडुला का जो पार्ट होता है ये इनर पार्ट हो जाएगा ओवरी का. तो इसमें जब हम देखते हैं ना तो ये वाला जो पार्ट हमें दिखता है which is having the blood vessels, this represents the ovarian medulla. ये ओवेरियन मेडुला का पार्ट हो जाएगा. एंड these structures which you can see, यहाँ से ये पूरा जो स्ट्रक्चर आपको दिखता है ना, this ultimately comes in the ovarian cortex. ये बेसिकली कॉर्टेक्स वाले जोन में आता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस हमारा oogenesis का जो पूरा प्रोसेस होता है दैट अकर्स इन द ओवेरियन कॉर्टेक्स. वो अकर करने को ओवेरियन कॉर्टेक्स में करेगा, लेकिन द ब्लड सप्लाई विच आर बीइंग प्रोवाइडेड टू दीज फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स हैं जो प्राइमरी फॉलिकल से लेकर के टर्शरी फॉलिकल, देन ग्राफियन फॉलिकल, देन ओवम को जो ब्लड सप्लाई मिलेगा वो सारा का सारा यहाँ इस मेडुला से मिलता है. बिकॉज ऑल दी स्ट्रक्चर्स विच यू कैन सी ओवर हियर ना, ये सारा का सारा ब्लड वेसल्स को रिप्रेजेंट करता है. तो ये हो जाएगा. So the entire process of oogenesis occurs in the peripheral part, लेकिन जो blood supply होता है वो इस inner part of medulla में present होता है. All right. So this is all about the oogenesis, process of oogenesis. We will be taking up this chapter in detail again. All right. Human reproduction को हम फिर से लेंगे and we will be discussing this as a part of your NCERT batch. That means in your emerge batch we will be again taking up this lecture and finishing up again. All right. So this is all for today. Thank you.